बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है और ऐसे माहौल में इस समय आपको बता दूं कि एक कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस देश में बड़ी कॉन्फ्रेंस है। वो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है मुंबई में ही, और अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ जुड़ेंगे नवीन अग्रवाल जी जो एमडी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। अनिल, ओवर टू यू। शुक्रिया हेमंत। नवीन अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले तो एक फील दीजिए कि इस कॉन्फ्रेंस में किस तरह का पार्टिसिपेशन आया है, कितने फंड मैनेजर्स, कितने इन्वेस्टर्स हैं, किस तरह की कंपनी आई है और क्या कुछ खास थीम है इस कॉन्फ्रेंस की? इस बार the scale of the conference is much bigger than what we've done ever before. तकरीबन 125 कंपनीज, 125 कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। 750 इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहे हैं एंड तकरीबन 3,500 से 4,000 मीटिंग्स ये लोग करेंगे पूरा हफ्ता। मंडे टू फ्राइडे दे आर गोइंग टू बी विथ अस, doing one-to-one meetings, attending the CEO track, going to Delhi and various other cities, seeing manufacturing sites, meeting up with policy makers. So it's a week-long, of excitement as far as meeting up with companies, meeting up with policy makers, attending the conference is concerned. नवीन जी, ये बताइए कि फिर जो इन्वेस्टर्स, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो हिंदुस्तान के बाजारों पर क्या राय बना रहे हैं और आगे के लिए वो किन ट्रिगर्स पर नजरें बनाए हुए हैं? सबसे बड़ा फैक्टर आज के दिन ये है कि इंडियन मार्केट्स, हमारा फर्स्ट क्वार्टर जो अभी तक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स अर्निंग्स आ चुके हैं, 7% प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है कंपनीज ने वर्सेस आर एक्सपेक्टेशन ऑफ 4%। फॉर द लास्ट 10 to 12 क्वार्टर्स, एवरी क्वार्टर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनीज उससे खराब नंबर्स रिपोर्ट कर रही थी। ये पहला क्वार्टर है जब हमारे एक्सपेक्टेशन से कंपनीज ने नंबर्स ज़्यादा रिपोर्ट किया है। देयर इज नो ग्रोथ इन मोस्ट ऑफ द मार्केट्स ग्लोबली। इंडियन मार्केट्स एटलीस्ट ऑफर अ प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ coming at double digits in terms of corporate earnings for the current year as well as for the next 2 years' time. We expect corporate profits to be at least 15 to 20% growth over the next 2 years' time. This is not a growth that you are seeing in many other markets. दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि Indian bonds are also offering a very healthy yield with a stable currency. Yield is not available in the West today. So in a market which is X yield, X growth, India stands as an oasis which offers both growth in the economy and corporate earnings and yield on its debt instruments, and which is what is driving capital into India. आप देख रहे हैं कि Indian foreign investments have continued to be positive, Indian debt investments have continued to be positive, domestic flows into equities have been positive. Maybe the scale, जिस पैमाने पे ये flows आ रहे हैं वो शायद थोड़े घटे होंगे in the last few weeks because the markets have gone up, but we think that today the skepticism in the market is quite high. अगर आप mutual funds देखें तो the redemptions in mutual funds and PMS schemes are anywhere between 75 to 100% of the gross inflows. यानी कि net inflows have become a trickle or very small in the last few weeks or last couple of months. We think that as long as markets remain skeptic like this, as long as redemptions continue to be so strong, you will see markets continuing to scale up to new heights. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि बाजार मजबूत है लेकिन घरेलू इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में ग्रोथ नहीं है, हिंदुस्तान के बाजार अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ इकोनॉमी में ग्रोथ है, बॉन्ड यील्ड्स अच्छे हैं, तो फिर किस तरह की थीम्स, किस तरह के सेक्टर्स यहाँ पर पसंद आ रहे हैं? आपकी क्या चॉइस है? इन्वेस्टर्स क्या पसंद कर रहे हैं? 2-3 सेक्टर्स जो स्टैंड आउट करते हैं आज के दिन। सबसे पहले तो यू आर अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर विच इज डूइंग वेल। वी हैव 70% ऑफ द बैंक डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग विद दी स्टेट ओन्ड बैंक्स, एंड जहाँ पे NPLs, एसेट क्वालिटी की काफ़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ दैट यू हैव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विच आर ग्रोइंग एट 20, some of them even at 30% growth rates. You have 10 new small finance bank licenses being issued. You have NBFCs which are reporting 20, 30, some even higher growth than 20 to 30%. So the whole private financial space comprising of private banks, comprising of NBFCs, comprising of the new small finance banks or even the insurance companies for that matter
I think are one of the biggest buzzing themes and may continue to do well going forward as well. The second theme which is relevant is the entire discretionary consumption theme. आप जैसे जानते हैं we've had a good spell of monsoons in the current year. 7th पे कमीशन के पेमेंट्स अगस्त महीने से आने शुरू हो गए हैं. बिटवीन अगस्त ऑफ 2016 एंड मार्च ऑफ 2017 these payments will be made to all the government employees all over the country. You are also aware that GST is likely to be rolled out in the coming days. So हमें लगता है कि ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन थीम है जिसमें ऑटोज हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, पैसेंजर कार्स हैं, अदर वाइट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ये सेकंड थीम है जो which has done well already, but अगले 6 से 9 महीने में next 6 to 9 months should be new highs for most of these companies in our view. Okay. And investors, by the way, share the same optimism and they are hearing the same thing from companies when they are doing meetings at the conference. तो इंटरेस्टिंग बातें आपने जो कही, पहला तो 7th पे कमीशन, अच्छा मॉनसून और जीएसटी का लागू होना, ये 3 चीज़ें बड़ी बाजार के लिए ड्राइविंग होगी. और एक स्पेस जो आप बता रहे हैं कि एनबीएफसीज काफ़ी पसंद है. हाल ही में जो कुछ आईपीओज आए हैं, उज्जीवन, इक्विटास, इस तरह की माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के, उनको बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला है. फार्मा स्पेस से या यूँ कहें कि हेल्थ केयर स्पेस से जो आईपीओज आए हैं उन्हें भी बड़ा रेस्पॉन्स मिला. तो क्या इतने अच्छे रेस्पॉन्स, इतनी अच्छी तेज़ी के बावजूद ये दोनों ही तरह की कंपनियां अभी भी इन्वेस्टर्स को पसंद आ रही हैं? बिल्कुल अनिल जी, ये स्ट्रक्चरल जहाँ पे स्टोरीज होंगी, जहाँ पे मार्केट शेयर आपका आज छोटा है और आगे मार्केट शेयर बड़ा हो सकता है, दीज आर ये स्टोरीज अगले 3, 4, 5 साल तक आराम से प्ले आउट कर सकती हैं. जैसे कि कंजम्पशन कंपनीज जो आईपीओज आप बात कर रहे थे, मनपसंद बेवरेजेस का आईपीओ आया, पराग डेयरी का आईपीओ आया, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक इक्विटास है, उज्जीवन है, हेल्थ केयर में डॉक्टर लाल पैथलैब्स का आईपीओ था. हमें लगता है कि ये सारी की सारी स्टोरीज स्ट्रक्चरल हैं, 3 से 5 साल में काफ़ी अच्छा कर सकती हैं. एंड वाइल द स्टॉक्स हैव रन अप ऑलरेडी फॉर दीज कंपनीज फ्रॉम द आईपीओ प्राइस, we think that maybe you may see a quarter of lull in the performance of the stocks, but the business continues to perform very strongly for many of these companies. So our outlook on these companies from a longer term, 3-year perspective continues to remain very positive. नवीन जी, आपकी कंपनी की, आपकी खुद की ये बड़ी एक्सपर्टाइज है बेहतरीन मिड कैप आइडियाज़ ढूंढने की, लेकिन जिस तरह की तेज़ी मिड कैप इंडेक्स में हुई है सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले में स्मॉल कैप मिड कैप शेयर काफ़ी तेज़ी से भागे हैं. क्या अब भी बहुत बेहतरीन आइडियाज़ बचे हैं, या काफ़ी लोग कहते हैं कि बड़े महंगे हो गए मिड कैप्स, और अब इन लेवल्स पर ऐसी कंपनियाँ ढूंढना, ऐसे आइडिया ढूंढना जिनमें अच्छी तेज़ी की गुंजाइश हो और पैसे लगाने का वैल्यूएशन सस्ता हो, वो मुश्किल दिख रहा है? क्या आप भी ऐसी मुश्किल देख रहे हैं इस वक्त इंडिया में, या फिर अभी भी मौके हैं काफ़ी? हमें तो ऐसे लग रहा है कि बहुत मौके हैं, लार्ज कैप्स में भी हैं एंड स्मॉल कैप्स में भी हैं. आई थिंक कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी इज नॉट सो रेलेवेंट इन स्टॉक पिकिंग. What is more important is your understanding of the business from a longer term perspective. एंड आप लार्ज कैप देखिए, मारुति का भाव एक ज़माने में नीचे में 1,000-1,200 रुपया हो गया था एट द टाइम ऑफ द स्ट्राइक. आज इसका भाव 5,000 रुपया प्लस है. तो जो मिड कैप में तेजी आई है उससे ज़्यादा तेजी मारुति में आई है. ऐसे बहुत सारे लार्ज कैप्स हैं विच हैव डन exceedingly well. Companies like Bajaj Finance, which used to be mid caps, have now become large caps. Market cap 40, 50, 60 हज़ार करोड़ रुपए हो गए हैं कई कंपनीज के, $10 billion हो गए हैं, which is almost like a large cap company. And on the other hand, as I mentioned to you, we've had at least 10 IPOs which have given you 30, 50, even 100% return from the IPO prices. I think there is no dearth of ideas. अगर आज भी आप मुझे अगर आप हमें 100 रुपीज़ दें, उन 100 रुपीज़ से 15 या 20 अच्छी कंपनियां खरीदना बहुत ही आसान है, जो यहाँ से भी हमें लगता है कि 20% रिटर्न अगले 1 साल में आराम से दे सकती है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि मतलब अभी भी बाज़ार में पैसे लगाने के बहुत मौके हैं. नवीन जी, जिस सेक्टर की आपने बात कीजिए ऑटो की, एक तो ऑटो पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि लोग सोचते थे कि यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी नहीं, लेकिन 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये तमाम शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया. तो ऑटो शेयरों पर इस वक्त आप कहाँ पॉजिटिव हैं? और दूसरा, जिन्हें हम अच्छा समझते थे आईटी और फार्मा,
वहाँ पर काफ़ी निराशा हुई। तो इन दो सेक्टर्स में क्या ये कमज़ोरी होने के बाद, गिरावट होने के बाद पैसा लगाने का मौका है? तो एज फार एज द ऑटो सेक्टर इज कंसर्न, हमारे फेवरेट स्टॉक्स में मारुति काफ़ी टाइम से हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है, एंड अभी भी इट इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स. दे हैव had one of the biggest successes with their new model launches. 6 से 8 महीने की वेटिंग लिस्ट है ऑन द न्यू मॉडल लॉन्चेस. इनफैक्ट आज के दिन कंपनी को प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट है टू बी एबल टू केटर टू द डिमांड्स ऑफ द मार्केट, विच इज इन टर्न ब्रिंगिंग डाउन द डिस्काउंट्स एंड इंक्रीजिंग द रियलाइजेशंस ऑफ द कंपनी मच मोर देन एक्सपेक्टेड. दूसरी तरफ उन्होंने 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है. इंडियन produced Baleno is now being exported to Japan, and we think that exports is a very big opportunity for them. They are a big beneficiary of more petrol cars being sold, as they have a higher share of petrol cars. They will be a beneficiary of 7th pay commission. They will be a beneficiary of GST. So each of these mega trends, they will be a beneficiary. So we continue to remain very positive on Maruti. I'd be very surprised if the stock does not continue to do very well over the next 3 years time. महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि रूरल प्ले है, ट्रैक्टर्स है, यूटिलिटी व्हीकल्स है, bulk of their sales volumes come from rural India. Rural India has gone through a lot of stress, a lot of duress over the course of the last 2 years with bad monsoons. Rural demand has been hit very badly, and that in turn has reflected in the volumes of Mahindra and Mahindra as well as the margins. We think that the worst is behind for M&M as far as its core business is concerned. We also think that the worst is behind for its subsidiaries like M&M Financial Services. So we think that the risk reward with good monsoons behind you is quite favorable for stocks like M&M as well. Turning to your question on IT and pharma, I think the near-term headwinds for the IT sector is quite strong. आपने Brexit के बारे में सुना है, जहाँ पे सभी कंपनीज ने बोला है कि they will have that is a risk as far as the performance for the year is concerned. We've had Infosys come and report one of the large clients, orders being hit because of this whole Brexit issue. TCS ने इन्वेस्टर्स से मीटिंग की कल यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि सेकेंड क्वार्टर में जो यूजुअली अपटिक होती है, इस बार उतनी अपटिक नहीं होगी. इन्फोसिस का एनालिस्ट मीट था पिछले हफ्ते में. At that analyst meet, they said that they will review the guidance on FY17 at the time that they report the second quarter results. So I think in the near term, clearly, when you are seeing the financial services sector do well, when you are seeing consumption uptick on the back of various factors that we spoke about, technology sector, which is large weightage in the markets, is seeing some rebalancing in the portfolios, and that is why you're seeing the stocks perform badly. Longer term view on companies like Infosys continues to remain very positive. Turning lastly to the pharma sector again has gone through a whole bunch of headwinds because of US FDA inspection, because of the pipeline and the launches not happening as per the plan. You've had cuts in earnings numbers by the companies. Remediation measures are on. These are time consuming and costly exercises, and companies will also overcome this in our view. Here again, we remain very positive on some of the leading companies like Sun Pharma and Lupin. But I must tell you that the positive views on these stocks are from a longer term perspective, and the near term headwinds continue to impact some of these companies. नवीन जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपकी रिसर्च के बेसिस पर और इस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी आपने सुना, समझा, लोगों से बातचीत की, उसके बेसिस पर अगर मुझे मिनिमम 5 साल और 10 साल के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना हो तो किस तरह के स्टॉक्स का होना चाहिए? आप जब भी 5 और 10 साल की बात करेंगे, सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एंड इन दैट लेट्स से HDFC बैंक, आदित्य पुरी जी ने प्रेजेंटेशन हमारे कॉन्फ्रेंस में कल किया था. आज उनकी जो मार्केट शेयर है, जो नंबर 1 बैंक इंडिया में है, उनकी 25% मार्केट शेयर है, और इनकी मार्केट शेयर है 5% से थोड़ी सी ऊपर है. They have capital with them. Asset quality is not a problem for them. They are doing all the right things. They are the leaders in retail lending. They are now enhancing their exposure to corporate lending as well. अगले 10 साल के लिए ये स्टॉक 15 से 20% कंपाउंडिंग होना और उनका मार्केट शेयर यहाँ से 8 से 10% जाना,
बहुत ही आसान और सर्टन लगता है हमारे ओपिनियन में। इसके अलावा देर आर मेनी कंज्यूमर कंपनीज ऑल्सो हु प्रेजेंटेड। वी हैड पिडिलाइट which presented yesterday. पिडिलाइट के पिछले 10, 15 और 20 साल के रिटर्न्स ओवर 25% हैं। With a new leadership in place, with Mr. Bharat Puri taking over the leadership and the near monopolistic position that they enjoy, a very strong brand that they enjoy, with all these factors that we talked about for economic recovery, I think I'll be very surprised if next 10 years the stock gives you less than 20% return. इंटरेस्टिंग। तो इतने बड़े प्राइस के स्टॉक्स, इतने अच्छे मार्केट कैप के स्टॉक्स में भी अब भी ग्रोथ बाकी है और अगले कई सालों में ये स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। 15 से 20% की सालाना ग्रोथ के लिए HDFC बैंक और पीडीलाइट पसंद है नवीन अग्रवाल जी को। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी इस बड़ी बिजी कॉन्फ्रेंस में से हमारे लिए आपने वक्त निकाला और बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाजारों का हाल में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।